पार्टी एफिलिएशन बता दी तहरीक इंसाफ, आपने तहरीक इंसाफ बता जी तहरीक इंसाफ। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होने के नाते आप चाहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट पे तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्ट हो। नो, मैं दोनों बातें चाहता हूँ, आइदर दैट देयर आर टू वेज फॉरवर्ड। दोनों आप अपना ग्रीवेंस बताइए। दोनों बताइए कैसे हो सकता है। देयर आर टू रूट्स नाउ, आइदर आई बी elected as a PTI candidate or I be allowed to join SIC and be elected as an SIC कोई candidate. आइन या कानून इसकी इजाजत जी देते हैं। आइदर का लफ्ज है। जी मैं अर्ज करता हूँ ना, मुझे इजाजत दीजिए। That is the heart of the matter. Now, if I may allow me to start with the reading of Article 51, I respectfully submit that some aspects of it need to be re-examined. And my basic propositions are simple. Let me just state those. That there is nothing in Article 51(6)(d) or E. Mr. Salman Raja, I think coming to that argument will be later. We just want to understand the connection first. This is a woman who wanted to come in on the reserve seats. She could have only come in had some independent or a political party would have, a PTI ki list mein thi. So your question first would be that PTI has actually a political party in the elections. That was dislodged by the ECP's decision. Did she challenge that decision of the ECP? In a writ petition, yes. She did challenge that. The other वो तो हमारे सामने नहीं है ना। Where is that decision? Step wise चले ना। जी, जी। She was aggrieved of the fact that her political party, which were to elect her, Yes. was somehow taken out of the scheme. Yes. So that decision, did she challenge? the women's wing, other members of. Where is that decision? पर वो भी मैं आपको देता हूँ। मुझे सलमान साहब ऐसे तो नहीं आर्ग्यू होगा। इस तरह ना करें ना। मुझे देखें ना एक तरीके It's here, it is here. I need to file it. बिल्कुल करें आप, लेकिन let's not jump the gun. Let's go step wise. आप कहते हैं कि मैं एक रिजर्व सीट की कैंडिडेट हूँ, पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी स्कीम में आएगी तो आपको इलेक्ट करेगी। पीटीआई को आउस्ट कर दिया ईसीपी ने, बिल्कुल आप उसको चैलेंज कर सकते थे। जी। उसको चैलेंज किया है और उसका फैसला हमारे सामने है तो हम देख सकते हैं ना। अब आप किस तरह आ रहे हैं? हाउ डू यू जस्ट skipping all that and you saying directly coming to us? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, the election commission took the position both in this matter, the reserved list. What is the position of election commission is irrelevant. They may be taking a wrong position. Yes, My lord का सवाल ये है, they passed an order. Did you challenge it? You said yes. Yes. So where is that order? मैं अभी आपको देता हूँ। नहीं अभी की बात नहीं, but that's not been assailed. No. That been assailed before us. No, allow me to explain. Then I filed my petition, which is before your lordships, in which I said I be treated as. पहला rule होता है of any petitioner, full disclosure of all material facts. You're not disclosing this fact. Why should we even hear you? You're not showing us that order. I'm not here because of that order. I am here because We want to see it. जी, I will provide it. Other members of I don't know what it says. So that order is not the issue. मुझे अर्ज करने दें. Let me explain. And you have to answer the question. I am. कमल अभी दे दें, हमें दिखाइए order दे दें. I think मैंने जो दिया था उसके अंदर वो भी था शायद. I gave more documents than I was meaning to give at that time. आपने मुझे एक ये दिया था, दो इसके साथ दो हैं शायद जी. इसमें the election commission then issued a notice to us after the High Court referred the matter to the election नहीं हमारे commission. पास order. मैं अभी आपको दे दूंगा. मुझे देखिए मिस्टर सलमान, फॉर माई क्लैरिटी, आपका केस ये है कि देखें पीटीआई आउट नहीं हो सकती थी पॉलिटिकल फ्रॉम द इलेक्शंस। आप आइए जरा सा, आपका ये केस है ना कि पीटीआई की एफिलिएशन से जो लोग लड़े हैं, पीटीआई इज एक्चुअली कंटेस्टिंग द इलेक्शंस and PTI could not have been taken out of the elections. Is that your main plank? Yes, twofold. Having said that, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि बीच में एक ऑर्डर आ गया। Are you telling us to take a notice of that under Article 187? What are you saying? How do we touch that order in between? मैं अर्ज कर रहा हूं. What are you saying? That order gets subsumed by the ultimate order of the election commission, which denies SIC. That order which we have no idea what it is, is not before us. But Mr. Salman Sahab, sorry to say this is. I will not. How can I allow you something? I am coming to the heart of the matter, which is the final order of the election commission. And then माइक के करीब आपकी आवाज सही नहीं आ रही। माइक के करीब। The order of the election commission finally and of the. Is this your only petition before the Supreme Court or have you filed anything else?
I filed when my personal case was not in. Where is PTI in all of this? So she's a member of the. Can you please answer there the are many question? numbers. I've asked you a question. Can you please answer it? Have you filed anything else? I have filed with CM 5839. So apart from what is before us right now, have you filed any other petition No. in your name? No. You haven't filed in. No. Have you challenged any order of the Election Commission? No, because those orders were challenged by other members of the PTI, and therefore those orders finally applied. Have they come to us? जी Have they come to us? अब ये देखिए Are they before us? Have they been challenged before us? मैं जी जी Those orders are not before us. नहीं नहीं, but I am aggrieved of the final order of the Election Commission. ये तो बाद में Final order. Election Commission का order पहले तो आप ये वाली पोजीशन क्लियर कर देना कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर आया जी। जिसमें आपको फॉर्म 66 में डिक्लेयर कर दिया और फॉर्म 33 में जी। कि ये कैंडिडेट जो है ये इंडिपेंडेंट है जी। हालांकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे ठीक हो गया। वो- आपने तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं की ना, तो आप पर तो वो कभी नहीं लगता किया। नहीं है ना, कभी यू आर नहीं। रिजर्व सीट, तो सलमान आप पर साहब। लगता नहीं जी, है। हाँ, देखिए- आप पोस्ट इलेक्शन आए हैं हम- और आप अग्रीव्ड हैं पोस्ट इलेक्शन ऑर्डर से। वो कौन सा ऑर्डर है दैट यू आर अग्रीव्ड बाय? The order of the Election Commission. डेट कौन सा है? जी, the order which is the impugned order in ये जो these. बाकियों में इम्प्यून हुआ हुआ है ये बताएं ये तो ये SIC से रिलेट करता है ना। देखें प्लीज जरा सा देखें, जरा मिस हैंडल हो रही है सिचुएशन। आपका केस हमारे सामने ये बना के लाए हैं कि एक्चुअली PTI हैज वन द इलेक्शन और PTI वाज इन द इलेक्शंस, ये आपका केस है, इसीलिए मुझे रिजर्व सीट पर लेना चाहिए था। बीच में ECP ने डिसाइड कर दिया कि वो पार्टी नहीं है। जो मेंबर्स जिन्होंने कंटेस्ट करना था उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, वो जाके SIC चले। नाउ द impugned judgment before us is whether SIC is a political party or not, Yes. and whether at all proportional representation आएगा। Yes. आपका जो प्लैंक है, you are on the PTI card, वो No, तो बीच I'm में है saying नहीं both ना, things. You're I'm not the saying- SIC। No, I'm saying both things. आप एक चीज और बता आप दें कि अगर अपना पहला आर्ग्यूमेंट कर लेना। आप जरा बता दें आप SIC की लिस्ट में हैं नहीं जी जी जी, SIC ने जो लिस्ट दी है उसमें भी हूँ। वो दिखाएं, आप वो हैं? दिखाएं। तो बस बात वो खत्म हो दिखा दे, बात खत्म हो जाती है। तो फिर तो अगर आप SIC जीत जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ है, सिर्फ कागज नहीं है। तो दिया ही नहीं ना। Sorry, we will not give you this indulgence. No, no, no. We unnumbered petition. You just walked into the No, Supreme not just Court. walked in, Lord. Kindly Well, what see. are we hearing? Lord, There is an order of Lahore High Court. You're not showing that to us. SIC की लिस्ट दिखा दें। You're not showing us the order of the election Lord, commission. allow me SIC has filed a list. Yes, Have a yes, look in that and show us your name if it's कोई देख लें, है आप बीच जी में? मुझे अर्ज थोड़ा सा ये करने दें कि शी इज अ मेंबर ऑफ द PTI. ये आप ये बार-बार ना कहना, हमने नोट कर लिया. She's a member of the Women's Wing. सुन ली बात. Therefore, had the ultimate order of the Election Commission and of the Peshawar High Court been different, she would have had a way forward either as a PTI candidate or as an SIC Just candidate. show us your name in the list filed by SIC. Is her name on इस that तरह list? तो ना करें ना, abuse of process है। आप Siddiqui? प्लीज अब SIC का दिखा दें। SIC की लिस्ट किधर है And let's रिजर्व get done with कैंडिडेट्स की? SIC. क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमारा डिनाई कर दिया था राइट टू रिजर्व सीट, दे डिडंट अलाउ अस टू फाइल द प्रायोरिटी। आपने हमें तो बताया होगा ना कि दिस लिस्ट यू वांट टू आपने कहा कि फाइल में उसमें लिस्ट पहले आप SIC की लिस्ट में दिखा जी, दें जी, ना, नहीं, was she नहीं, there and then वो she भी could नहीं, agitate this matter। जो हमने एप्लीकेशन डाली थी रिजर्व सीट्स की उसमें ठीक है सलमान साहब, अगर SIC की लिस्ट में भी इनका नाम होगा, किसी का नाम नहीं है, एक किसी का सेकंड, नाम नहीं, एक Faisal is now सेकंड, clarifying, एक he did सेकंड। not take that list. अगर सपोज आप SIC की लिस्ट में भी हैं, then your entire argument is what Faisal साहब the argument is, then you can't go the PTI route। तो इसलिए कोई क्लैरिटी ले आए कि आप PTI की तरफ से बहस कर रहे हैं, SIC की तरफ से बहस कर रहे हैं। वो हमने परमिशन मांगी थी। सलमान साहब